Okay, do you guys hear me now? Voice issue, still voice issue. Okay, okay, stop. It's clear now. Okay, fine. All right, thank you. Okay, all right. Okay, so thank you very much for joining. I think we have some issue with the tool, and so many people are still sending us messages that they are unable to join the webinar. So I hope that the server is back soon. I think most people have problems from Pakistan. We are already 10 minutes late. We had to figure out how to actually make this thing run. So good evening, everyone. Here in the Netherlands, it's evening time. So because we are four hours late, there's a 4-hour difference with Pakistan. So I hope you guys are already done with your dinners and everything. Still voice issues. Some people say still some voice issues. Make sure if you're unable to hear me, or if the voice is not clear, so try changing browsers. So if you're using Chrome, then use Mozilla, or use if you're using Firefox, use Chrome then. All right, so please stop. अच्छा उर्दू में चलो उर्दू में करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत खुशामदीद। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्लान किया हुआ था कि एक छोटा सा सेशन करते हैं जिसमें हम आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दें, जो आपके हायर एजुकेशन के जो आपके प्लान्स हैं उसके लिए, यानी जो आप बाहर आना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहता है या अपने खर्चे पे बाहर आना चाहता है लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा। तो वॉइस इशू मैं भी सुन रहा हूँ, वॉइस इशू है, तो हमारी तरफ से मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को आवाज़ जा रही है, तो इधर से नहीं है इशू। आप अब अपना क्या कहते हैं उसको, अपना ब्राउज़र चेंज करें या कुछ दोबारा से लॉग इन करें तो शायद सही हो जाए। एनीवे, चूंकि हम लोग लेट हो रहे हैं तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। सीन ये कि आप लोग बीच में सवाल मत पूछिएगा, अपने सवाल गौर से ये प्रेजेंटेशन देखें, गौर से मेरी बातों को सुने, और जब एंड में हम आपसे सवाल जवाब का कहेंगे तो तब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी आप सवाल मत पूछें क्योंकि फिर मैं सवाल पढ़ने लग जाऊंगा, तो इस तरह मेरा फोकस जो है वो इधर से चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। वकार अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सका, उसने मुझे भी बताया कि उसको अभी भी मसला हो रहा है लॉग इन करने में। अभी मेरा इंट्रोडक्शन ये कि मैं पीएचडी फेलो जर्मनी में, और साथ ही में रिसेंटली मैंने जॉब शुरू की है एक कंपनी में ऑपकॉम के नाम से, और मेरा मास्टर्स था वो एम्बेडेड सिस्टम्स में था। मैंने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप जो है उससे मैंने मास्टर्स किया था 2012 में। और हमारी जो इरास्मस मुंडस एसोसिएशन है, मैं उसको भी अपने साउथ एशिया में देखता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इस तरह ये जो मुल्क हैं इनमें हमारी एसोसिएशन के जो चीज़ें मैं उसे भी देखता हूँ। और इंजीनियरिंग मैंने पाकिस्तान में पेशावर से की थी। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। वैसे तो अगर हम लोग काफ़ी सारे इकट्ठे होते तो फिर आपसे भी इंट्रोडक्शन कराते, लेकिन अभी हम चूंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए हम स्ट्रेट अवे अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं। सो हु शुड डेफिनेटली अटेंड दिस टॉक टुडे, मतलब किन लोगों को ये टॉक जो है वो देखनी चाहिए, अटेंड करनी चाहिए। इफ आई नीड अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, so how can I get it? अगर आपका ये सवाल है तो आप you can attend this session. I have enough money to finance my study abroad. I just need to crack the key to get into a top ranked school.
अगर आपके पास पैसे हैं, स्कॉलरशिप आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप एक अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ऑल्सो दिस टॉक इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू. And the third thing is, I don't understand a thing about post-grad applications. I don't know what SOP is or who can I get a recommendation letter from. So if you have questions like these, yeah, then again, you're also a good audience for this talk. Finally, I need tips on CV, SOP, recommendation letters. I will use this webinar to ask some well-prepared questions. So also this webinar is for you if you have prepared some questions. Who may attend this talk today? You can also attend. I'm having a lazy Sunday. I'm just going to see what scholarships are there, and if I find something interesting to pursue, yeah, sure, you can also join in. I'm here to see how these two blokes, Waqar and Rizwan, look like. Unfortunately, Waqar is not here, but we can later upload his pictures on some of the groups, so you can see him then again. And I'm here for networking, for example. This is also a good reason. So a few people are still saying that they are unable to hear me. So again, a quick check. Yeah. So how many of you can hear me? Write in the chat. Yep. Yes, so a lot of people can hear me. So guys, those who cannot hear me, please refresh your browser or change your browser, or get a coffee. Maybe you have forgotten to put the speaker's volume on or something like that. Check your computer or internet connection or anything. From this side, it is working. Yeah. So these people can also attend this talk, and who should not attend this talk today are people who refuse to Google simple things. Yeah? And I'm here to get to know a few people. I will send them Facebook requests later and ask them to do all my work. So please do not attend this talk. Of course, we cannot stop you, but yeah, I will use the chat feature on the ED necessary chatter and perhaps troll others. So also please don't do that, okay? Okay, regardless of the type, welcome to the webinar. So we are going to start. First of all, I will tell you what will we speak about today. Yeah, and the questions, like we're gonna answer a few questions. कुछ सवालों के हम जवाब देंगे, ठीक है? पहला सवाल तो ये कि what is the पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो कहेंगे what is a quality post grad application, और साथ हम ये देखेंगे कि elements of a quality post grad application की एक हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें इसके लिए चाहिए. उसमें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बात करेंगे, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन होती हैं आजकल. एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, क्या चाहिए आपको बाहर जाने के लिए, मतलब आपने क्या कमाया हो, डिग्री क्या की हुई हो, जीपीए आपके पास क्या हो, वगैरह वगैरह. और उसके साथ रेज्यूमे आपको चाहिए होता है नॉर्मली. मोटिवेशनल एसेज, लोग इनको डिफरेंट नामों से याद करते हैं. सॉर्ट ऑफ इज एन ऑफलाइन इंटरव्यूज के आप मोटिवेशनल ऐसी चीज होती है कि आप मौजूद ना हो और कोई आपके बारे में जाने कि आप क्या आपकी प्रोफाइल है और क्या करते हैं आप वगैरह वगैरह, क्या आपकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्लान, सब चीजें क्या हैं. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशन लेटर्स, और साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे कि एक जो आम एक बड़ी अहम एक रिक्वायरमेंट होती है बाहर एडमिशन के लिए, वो लैंग्वेज, यानी कि आप अंग्रेजी में आपको आती है अंग्रेजी, ठीक है. वो हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे लेकिन अभी नहीं. सो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ क्वालिटी पोस्ट ग्रेड एप्लीकेशन. सही है. अच्छा, so what is a quality post grad application? An application that is more than the sum of its parts. सही है. तो जब हम ये सब, अक्सर लोग कहते हैं कि
मेरा GPA इतना है और ये फलां चीज इतनी इतनी है। क्वालिटी एप्लीकेशन वो चीज होती है जो सब चीजों को मिला के एक्सेप्शनल इम्प्रेशन दे कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है, इसके पास इसका GPA भी अच्छा है, इसने रिसर्च भी की है, इसका वर्क एक्सपीरियंस भी है, इसने वॉलंटियर भी काम किए, सब चीजों को मिला के एक जो पैकेज बनता है वो if it is more than the sum of its parts, then this is a quality application. What is in a quality application? It's a presentation of your educational testimonials, motivation, recommendations, skills, experience, and future plans that makes your profile stand out in the eyes of the reviewer. जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उस एप्लीकेशन को जब कोई रिव्यूअर पढ़े तो उसको पता चले कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको उसको बुलाना चाहिए, आपको एडमिशन देना चाहिए या स्कॉलरशिप देना चाहिए। फिर आगे क्या चीज है? A coherent and consistent package in which each element supports what is presented in other element. For example, if your resume says you worked in a Chinese restaurant kitchen, do not get a recommendation letter from Pizza Hut. So एक पूरा पैकेज जो होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, सही है? तो सपोर्ट ऐसे करता है कि अगर आपने कोई काम, मतलब हर जो चीज है वो मल्टीपल जगह पे रिफ्लेक्ट हो। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपका तो अच्छा ही होगा कि आपका वो कोई रिकमेंडेशन लेटर जो है वो वहां से आ जाए, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था तो उसका रिकमेंडेशन लेटर में जिक्र आ जाए, या अगर आपकी CV में कोई प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं या आपने कोई अचीवमेंट्स किए हैं तो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उसका मेंशन होना चाहिए, ठीक है? और सही है, इसके अलावा कुछ मजीद चीजें इसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोरी, सो योर पोस्ट ग्रेड एप्लीकेशन इज एक्चुअली अ स्टोरी दैट टेल्स not just how good you are in physics, for example, say it, but also reflect on your qualities as a person. For example, be a singer or magician, or be good at something else too other than study. So, आपकी प्रोफाइल जो है वो ऐसे नजर आए कि आप एक किताबी कीड़े नहीं है, या सिर्फ उन्हीं चीजों का आपको नहीं पता जिनके बारे में आपको स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बताया गया था, बल्कि वो चीजें भी आप जानते हैं जो कि आपकी स्टडीज से ताल्लुक नहीं रखती, which reflects on you as an interesting candidate. Okay, so what is a quality? If I ask you to choose one word to describe a good application based on the points in the previous slide, what word would you choose? आप टाइप कर सकते हैं। Actually, I'm asking you a question. जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छी एप्लीकेशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आप क्या वर्ड चूज करेंगे? Amalgamation, unique, divergent, impressive, best, complete and thorough package. Okay, somebody else? Next, motivational, attractive, relevant, elegant, incredible, simple and comprehensive, thought-provoking, nice words, no? Good adjectives. Exceptional. All right. So all of these are eye-catching. All of these are very good answer, of course. Yeah. But I have my own word, which I'm going to show you in the next slide. Which I think every application should be. So my choice of word is actually interesting application. Yeah. Say. So why do I choose this word, interesting application? Because when you look at the word interesting, it's actually a combination of, combination of everything. It's like when somebody think about this, if a reviewer looks at your application and then raises his hand and tells another reviewer, hey, this is an interesting application, this would be the word he uses, which means कि इस application में सारी चीजें, this guy has a good academic profile,
इस बंदे ने इसका जॉब एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, या इस बंदे ने जो है तो वो वॉलंटियर वर्क किया, कोई इस तरह प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या इस बंदे ने की कोई बड़ी अचीवमेंट है. सो इफ यू थिंक अबाउट इट देन ये बाकी नहीं रहता कि इसके पास सारी चीजें हो. बाज़ औक़ात कोई एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से भी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया हुआ इस बंदे ने. सही है, मिसाल के तौर पर आपने डिसाइड ये किया कि आप कराची से जो है तो वो मॉस्को जाएंगे साइकिल पे, मिसाल के तौर पर. अगर आपकी एप्लीकेशन में ये नजर आता है तो हो सकता है जो रिव्यूअर हो उसको ये बड़ी एस्टॉनिशिंग सी बात लगे और वो ये कहे कि see this is a very interesting application, स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जॉब के लिए एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें जिसमें इस तरह का नॉलेज जो आपने एक्वायर किया होगा इतने बड़े बाइकिंग एक्सपीरियंस से, वो आपको अगर उसमें काम आता हो तो आप देखें वो फौरन कहेंगे. सो इंटरेस्टिंग इज एक्चुअली अ वर्ड. सो योर जॉब इज एक्चुअली to make your application interesting for a reviewer. So there are a number of ways to do that. Yeah, you have to look how you can achieve this purpose. Okay, so the purpose of your application is to attract the interest of the application reviewer, and you can achieve this by finding interesting but relevant things in your education, profile, life, future plans, whatever you see, which makes you a standout candidate among all others and give the reviewer no choice but to write accepted on your application. Okay, so therefore making a quality application is a skill that needs to be mastered. So quality application ये नहीं है कि आपने एक दफा जो है बस एक एप्लीकेशन बना ली और बस ये हो गया. ये एक स्किल है, ये आपको सीखना है, और ये एक ऐसी स्किल है जो आपको सारी चीजों में इस एक काम के अंदर आप बहुत सारी स्किल्स मास्टर कर लेते हैं. जैसे रेज्यूमे कैसे बनाना है, एसेस किस तरह लिखना है, ओके, और मतलब क्या अपने आप को सेल कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप इस एक चीज के अंदर सीख लेते हैं. सही है. सो अक्सर सवाल लोग ये पूछते हैं कि आई हैव डन नथिंग इंटरेस्टिंग इन माई लाइफ, व्हाट कैन आई डू. लोग कहते हैं मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ग्रेड अच्छा नहीं है. तो पहले तो सवाल ही पैदा होता है कि आर यू रियली श्योर दैट यू डोंट हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ. फॉर एग्जांपल, आई मीन आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम वाकई नहीं किया हुआ, और यू जस्ट डोंट नो दैट यू हैव डन समथिंग लाइक दैट, राइट. सो a lot of us never look back at our lives and see we have done some incredible things that we have never thought about, right? So search your soul, don't Google this one, okay? So पहले तो अपने अंदर देखें कि आपने वाकई ऐसे कोई काम किया हुआ है कि नहीं. मतलब मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने कोई इतना जबरदस्त काम, क्योंकि a lot of times what we do, we actually don't value that stuff a lot. We say okay, जो हमने छोटा सा काम किया, मिसाल के तौर पर आपने या कोई प्रोजेक्ट किया था, आप उसके ऊपर सारी अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बेस कर सकते हैं. आपने कोई वॉलंटियर काम किया था, उसके ऊपर सारी चीजें बेस कर सकते हैं. So think, first of all, look inward if you really have done something which is useful in the context of applying to a master's program or a PhD program. Do something interesting, right? If you don't have something interesting in your life, like to make your application look interesting, if you don't find something in your profile, so find it and do it. Find a project to do, tag with a professor in his research, find a volunteering task, travel on a bicycle from Karachi to Moscow. So like the purpose of this slide is to actually see that application, अगर मैं कहीं बाहर अप्लाई कर रहा हूं तो वो ये नहीं कि मैं अभी बैठ के अप्लाई करूं, अभी मैं सोचूं कि मैंने क्या, हाँ मैं अभी भी अप्लाई करूंगा जरूर, लेकिन ये एक प्रोसेस है. ये इस प्रोसेस में मैंने अगर बाहर जाना है तो मैंने ऐसी चीजें करनी होंगी और ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी और एक्सपीरियंस गैदर करना होगा जिसकी वजह से मुझे बाहर एडमिशन मिल सकता है. सो इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग. इट्स नॉट लाइक वन टाइम जॉब जो आपने आज बैठ के कर लिया, अप्लाई करते करते अच्छा मेरा तो हो नहीं रहा. भाई वो रेलेवेंट स्किल्स जो है वो आपने एक्वायर करनी है, जो कि आपको इस मास्टर प्रोग्राम में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोगों ने 2-2, 3-3 साल तक
ट्राई किए, तब जाके उनका स्कॉलरशिप हुआ या एडमिशन हुआ। क्योंकि और उन 2-3 सालों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया, उन्होंने नई स्किल्स एक्वायर की, उन्होंने नए काम किए, नई जॉब्स किए, नए कोर्सेज पढ़े, सारी अपनी फॉर एग्जांपल आइल्स के स्कोर को इम्प्रूव किया। सही, तो इसलिए ये एक प्रोग्रेसिव काम है, ये एक दफा करने से बंद नहीं हो जाता। ये आपने इसको रेगुलरली आके प्रोग्रेसिवली करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, उसमें बड़े फायदे भी हैं इस काम को करने में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी मूव अप टू एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी पोस्ट ग्रेड एप्लीकेशन। हम इसमें वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। So first of all, most universities and programs around the world accept online applications. सही है, अब सारी यूनिवर्सिटीज दुनिया में तकरीबन वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, मेरा नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, वगैरह वगैरह, और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं कि आपकी डिग्रीज, के ट्रांसक्रिप्ट्स, ये चीजें आप अपलोड करते हैं। रेफरेंसेस, कि आपके बिहाफ पे कोई ये कह सके कि आपने जो बातें, जो आपने स्किल्स अपनी बताई हैं या जो स्कोर्स बताए हैं वो जेन्युइन है। राइट, सो एंड सम यूनिवर्सिटीज में आस्क टू सेंड प्रिंटेड एंड साइन एप्लीकेशन वाया पोस्ट। सो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि नहीं जी, आप हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किए वो पोस्ट से भी भेजें। सो क्लियरली जब आप कहीं अप्लाई करें तो उनकी वेबसाइट पे क्लियरली देखें कि क्लियरली उस पर देखें कि आपकी जो एप्लीकेशन है क्या वो उसको पोस्ट के जरिए तो नहीं भेजना। तो ऐसे ना हो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके बैठ जाए और आपकी एप्लीकेशन कभी प्रोसेस ही ना हो और आपको कभी पता भी ना चले कि मैंने तो इसको कभी भेजा ही नहीं है पोस्ट से। सही है। एजुकेशन टेस्टिमोनियल्स, क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है? इसमें आपका जीपीए इंक्लूडेड है कि ग्रेड आपका क्या, आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे। एक बहुत ही अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो कहते हैं कि जीपीए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, जीपीए इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अच्छा स्कोर लिया, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर हार्ड वर्क, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर टैलेंट, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन your ability to actually transform your talent into results as well. So GPA important है, लेकिन ये GPA जो है या ग्रेड जो है ये फाइनल चीज नहीं है। सिर्फ GPA, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा GPA होता है और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन आती है तो वो एज अ पैकेज उतना इंप्रेसिव नहीं होता जितना किसी और बंदे का जिसका GPA तो कम है लेकिन उसकी बाकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। जैसे उसने कोई, अब मैं अगर आपसे सवाल ये पूछूं कि एक बंदा है, उसका जीपीए 4.0 है, सही है, और उसने 3-4 साल पहले बैचलर्स किया। 3-4 साल के बाद जब वो अप्लाई करता है तो वो बड़े मजे से कहता है कि मेरा जीपीए, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि आपने कोई रिसर्च की है या आपका जॉब एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, उसके पास जॉब एक्सपीरियंस किसी और चीज का है, लेट्स से रिसर्च उसने नहीं की, इसके मुकाबले में एक बंदा है उसकी 2.5 जीपीए था बैचलर्स में, लेकिन उसके बाद उसको क्या हुआ कि उसने एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ काम किया और किसी अच्छे जर्नल में उसने एक पेपर पब्लिश कर दिया, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह वगैरह। तो आप सोचें कि आप एप्लीकेशन रिव्यूअर ये कहेगा कि हाँ अब वो जमाना चला गया कि सिर्फ और सिर्फ जीपीए पे लोग सिर्फ और सिर्फ जीपीए के ऊपर लोग जो है वो फैसला सुनाएंगे कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है। ये एक आउटडेटेड फिलॉसफी है। GPA is one of the indicators, but it's not everything. जो second important चीज है वो ये है कि the relevance of your previous education with the post-grad studies you're applying for. So एक जो बहुत important चीज है वो ये है कि जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं तो जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रीवियस बैकग्राउंड आपके पास है कि नहीं है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास डिग्री मास कम्युनिकेशन की है तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो नेसेसरी नॉलेज बेस नहीं है। सही है।
बाज़ बात ऐसा होता है कि आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा सकते हो, डिपेंड करता है कि वो जो दूसरी फील्ड है उसके लिए कितना डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है। समटाइम्स ऐसे कम होता है। अगर आप मिसाल के तौर पर आपने इंजीनियरिंग की है बैचलर्स में, लेकिन आप मास्टर्स मैनेजमेंट की किसी उसमें करना चाहते हैं, अक्सर लोग करते हैं, अब ये पॉसिबल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो रेलेवेंस आपको फिर वहां पे भी दिखानी होती है। अगर आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, किया आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में, तो आपने फिर भी ये बताना होता है कि आप इस मैनेजमेंट में कैसे फिट होंगे। आप वो किस तरीके से बताएंगे कि मैंने मेरी जॉब एक्सपीरियंस इस तरह का था, या मेरा इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, या मैंने इस तरह की नई नई स्किल्स एक्वायर की। इसलिए आपने ये रेलेवेंस दिखानी होती है। अगर आप अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास नेसेसरी नॉलेज बेस नहीं है, तो फिर उसमें आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्म की मोटिवेशन हो या कुछ इस तरह। सो इफ द प्रायर एजुकेशन वाज डिफरेंट, देयर मस्ट बी सॉलिड रीजनिंग हाउ द नेसेसरी knowledge base for the new field of study was acquired. For example, was it done during a job or a project or additional courses done, or a very strong motivation showcasing the desire to study something which is totally new. Alright? So आपने ये जो आपने ये बताना होता है कि आप क्यों एक नई फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। और अगर आप किसी उसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसके अंदर आपने, जो नॉर्मल बात है प्रीवियस एजुकेशन भी आप, तो आपने हाईलाइट करना होता है कि जो प्रोग्राम के अंदर, नए प्रोग्राम के अंदर जो चीजें चाहिए वो मेरी प्रोफाइल में कैसे हैं और कैसे मैंने एक्वायर की। सही है, उम्मीद है कि बहुत बोरिंग नहीं है हमारा ये सेशन, लेकिन हम यूजुअली सब अगर इंटरैक्टिव हो तो अच्छा होता है, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली हम इंटरैक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो एनीवे, सो रेज्यूमे पे आते हैं। दिस इज द हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने देखा, तो उसमें हमारे पास था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स हैं, और एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स के बाद हम अब रेज्यूमे पे आते हैं। तो हम रेज्यूमे को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेज्यूमे में क्या चीज होती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप ज्यादातर लोगों को रेज्यूमे का पता होगा कि क्या चीज है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से अच्छा रेज्यूमे बनता नहीं है। उसकी दो वजूहत है, नॉर्मली जो मैंने देखा है वो दो वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास हमें ये नहीं पता होता कि उसमें डालना क्या है, और दूसरा मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या नहीं डालना। सही। So what is a resume? A resume is actually a short, concise, one-page bullet points reflection of what you have as skills and knowledge, and what results have you achieved with these skills. So resume आपको ये बताता है, किसी बंदे को जो आपके बारे में पढ़े, कि आपके पास आपको क्या आता है, और उस जो आपको आता है उसके साथ आपने क्या किया, यानी उसका कोई रिजल्ट आपके पास आया है या नहीं। सही। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि ये वन पेज हो, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप 2 पेजेस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी जगह आपको, आप में से ज्यादातर लोग न्यूबीज होंगे, आप अभी आपकी इतना वर्क एक्सपीरियंस शायद ना हो, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो रेज्यूमेस को पूरा 2 पेजेस पढ़े। वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार जो चीज मुझे चाहिए वो इसके पास है या नहीं, और यही रेज्यूमे का काम होता है। रेज्यूमे का यही काम होता है कि वो जैसी आपकी उस पर नजर पड़े, उस पर एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन मुझे नजर आनी चाहिए जो कि मैं ढूंढ रहा हूं। और ये आपका काम है कि आप ये सोचें कि ये मेरा जो रिव्यूअर है वो उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में, वो मैं डालूं उसमें। वैसे तो आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने वो डालना है जो आपका रिव्यूअर ढूंढ रहा है। ठीक है। So what is not relevant for this application shouldn't be there. This is a postgrad application. Don't use up space putting your SSC and primary results. लोग अपने मैट्रिक के एग्जाम के रिजल्ट्स डालते हैं, मैंने उधर क्या पढ़ा था। It's just so is unnecessary details. अगर कोई आपका postgrad application आपकी देख रहा है, तो I don't think he's interested in what you did in school. Obviously you did good in school. That's how you got into a university. That's how you studied a comparative bachelor's degree and all that. Yeah. So in a resume, you have to list your project, your work, your activities, but
Do not write stuff which is not tangible. What does tangible mean? Tangible means that don't just use like adjective, for example, stuff which is actually measurable, quantifiable, जो कि आप इसको देख के बता सकते हैं कि जी ये जो चीज़ है ये इसके उसमें नाम उसके फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस मैंने किया तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने ASP.NET पे काम किया, ये वाला मैंने उसमें प्रोजेक्ट किया है, ये मेरे जो रिसेंट जॉब एक्सपीरियंस था उसके अंदर मैंने ये, तो आपके पास ये मैं आपको यहाँ पे कोई सैंपल भी दिखा दूं, लेकिन मसला ये कि हम इस वेबिनार का मकसद जो है वो एक स्किल ट्रांसफर करना है, वो आपको एक शॉर्टकट नहीं बताना। तो आप इस तरह कर ये हमारा मकसद ये है कि आपको हम पॉइंट्स दें कि आप एक चीज को खुद कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये एक अच्छा रेज्यूमे है या नहीं है। राइट, एम फॉर क्लैरिटी, too many words is clutter and is confusing and then it results into rejection, right? So don't use too many words, just in bullet points right on the spot कि यार मैं ये चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरा रिव्यूअर ये चीज ढूंढेगा और मैंने उसको यही बताना है कि ये मेरे पास है। Alright, lead the reader to other, also in a resume you should lead the reader to other source of information about you, for example a nicely constructed LinkedIn profile or my GitHub page, or if you have your own personal website, or you have a blog that you write, a technical blog, for example, if you're a journalism students, and if you have written any articles or something like that. So provide people more about, don't put everything on the CV. Make your CV so interesting that this person goes on Google and actually searches for you, that, oh, she says that she has worked with, she has produced, let's say, a small documentary. So she writes, what would I do if I'm a reviewer? I'm saying, okay, let's Google her name and let's see if we can find a documentary that was created by her, something like that. Okay? So, but do not put too much information on your CV, only to the point information. And then finally, tailor your resume for a specific program. Resume सिर्फ एक दफा नहीं बनता, वो रोजाना बनता है। जब आप कहीं अप्लाई कर रहे हो आप, और ये शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं रोज अपना रेज्यूमे चेंज करूंगा, जी बिल्कुल, फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप बस बैठे हैं, आपको पता होता है ये वाला सेक्शन इसमें से मैंने निकाल देना है और ये वाली चीज इसमें डाल देनी है। So it's very easy, just so yeah. So the question is, do you see that the same tips about resume as just highlighted are just as good for creating a resume for job too? Yeah. So see, if you want to apply for a job, again, you have to do the same thing. You have to present the same very way. You have to present your skills, your education, your experiences, your desire, inspiration, and a CV exactly the same way as you do this one. So it's basically the same for jobs, slightly different, yeah? Slightly different, but the difference is in terms of how the content is presented. The purpose of the content is the same, yeah? So next up is motivational essay. So people call it with different names. लोग इसको कहते हैं statement of purpose, motivational letter, letter of intent, for example, and many other things. So what exactly is this? And this is kind of a very scary thing for most of the people to write. People लोग कहते हैं मैं ये कैसे लिखूंगा, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, वगैरह वगैरह. So there are lots of yeah. So first of all, we define what is a motivational essay. So think about it in this way, that a motivational essay is actually an interview of you in your absence. Yeah? So this is a document that puts everything in you together and explains to the reviewer what do you bring as a candidate for the program. So आप अपने बारे में ऐसे बताते हैं कि सारी चीज़ों का खुलासा जो आपके रेज्यूमे में है, जो आपके एजुकेशन में है, जो एक्सपीरियंसेस में, उसको आप प्रिपेयर करते हैं ऐसे तरीके से कि जो प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप बेस्ट कैंडिडेट नजर आए। तो ये आपने देखना है कि आपने उसमें क्या लिखना है, सही है? So and the purpose is how good you can market yourself and your degree and your skills and the relevance of all these to the master's program you're applying to. See? और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यही होता है कि आप
कवर लेटर लिखते हैं या कुछ अपना प्रपोजल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, तो आप उसमें यही हाईलाइट करते हैं कि मैं क्यों इस प्रोग्राम के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट हूं। सही है, जब आप इस क्यों का जवाब देने के काबिल हो जाते हैं, आपके पास एक अच्छा ऐसे आ जाता है। सही। सो इसके अंदर आप ये बताते हैं कि हाउ गुड यू मार्केट योरसेल्फ, योर डिग्री, कि आपने जो डिग्री ली है वो क्यों अच्छी डिग्री है और वो कैसे आपको, एंड योर स्किल्स, कि आपके पास जो स्किल्स है, नॉलेज है, एंड द रेलेवेंस ऑफ ऑल दीज टू द मास्टर्स प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अप्लाई करते हैं, स्किल्स एक लिखते हैं, अप्लाई किसी और चीज में करते हैं। ठीक है, स्किल्स होती हैं अगेन, अगर आपने सही है काम एक तरह से किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई भी उसी प्रोग्राम में करें, या जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उसके हिसाब से अपनी स्किल्स लिखें रेलेवेंट, ताकि वो नजर आए। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी होती है कि आपने ये बताना होता है कि हाउ फेमिलियर, जो ये एक इंपॉर्टेंस को गौर से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे एसेस मैंने देखे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, मैंने बहुत सारे एसेस प्रूफ रीड किए हैं, बहुत सारे एसेस जो है वो मैंने देखे। नॉर्मली ये होता है कि लोग उसके अंदर क्या लिखते हैं, बड़ा कैची सा पूरा पैराग्राफ होता है, वो व्हेन आई वाज अ किड 2 years old समथिंग लाइक दिस हैपेंड ब्ला ब्ला ब्ला। बात वो सारा एक आपकी स्टोरी के बारे में होता है कि आई डिड दिस एंड आई एम वेरी एंथुसियास्टिक एंड आई वाज लाइक दिस एंड आई वाज बोर्न इनटू अ वेरी स्मॉल फैमिली एंड my stuff like that. All it's like a personal story, and personal stories are good, but a motivational essay is not just about you. It's actually about your suitability for the position that you're applying for. So if you do not reflect on that suitability, the purpose is not achieved. So अगर आप सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, इसलिए आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं बताना होता, आपने अपने बारे में बताना होता है, और जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं आपने उसके बारे में बात करनी होती है, और फिर ये बताना होता है कि जो आपके अंदर है वो उस चीज को जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कितना मैच है। सही है, सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखना। या आपको अगले इसीलिए आखिरी सेंटेंस को देखें, इट इंडिकेट्स योर फेमिलियरिटी, इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट द प्रोग्राम, द स्टडी एंड रिसर्च यू विल कैरी आउट देयर, and the saving features of the program, the university is involved and the mobility. So आपने ये बताना होता है कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ पढ़ने, इस प्रोग्राम को क्यों स्टडी करना चाहता हूँ, उस प्रोग्राम में कैसे ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे फ्यूचर प्लान्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करना होता है। So what must a motivational essay have? So things about your personal life, few sentences। सही है, इसको सारे को अपने बारे में नहीं करना। So few sentences about your personal life. Did something inspire you? कोई ऐसी चीज थी जिसने आपने इंस्पायर किया जो जिंदगी में आपने अभी तक किया है वो करने में। How did you become who you are? So आप ऐसे कैसे बने, लेकिन do not write more than one paragraph about this thing. Do not just make the whole thing about you. It's not about you. You seem like a narcissist, full of vanity. Lots of people just write about themselves. Yeah. So often a whole essay is a personal story, which is completely wrong. All right. Avoid the very popular catchy first paragraph if it is not really catchy. So अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग पहले पैराग्राफ में बहुत अजीब सी, लोग फिलोसॉफिकल कुछ लिख देते हैं, कुछ या फिलोसॉफिकल कुछ लिख देते हैं, या कोई स्टोरी लिख देते हैं कुछ इस तरह का। I mean, it's important, it's useful when you can actually relate this thing to what you are going to say. अगर आपने एक कोट लिखना है तो वो कोट आप तभी लिखें कि जब आप उस कोट को, सही, अगर आप एक बात लिख दें, let's say you want to start with some, या आप गांधी जी का कोट लिख देते हैं कि an eye for an eye makes the whole world blind. अब आपने कोट तो लिखते हैं, बड़े मजे का है, लेकिन would you be able to actually relate this quote to you, what you're going to speak about in the essay or not? अगर आपने वैसे ही कोई कोट लिख दिया और वैसे कोई स्टोरी कोट कर दी है या वैसे ही कोई फिलोसॉफिकल बात लिख दी है तो फिर उसका नुकसान होगा, that would look extremely stupid, and it does unfortunately in most cases. सही है? So also avoid that very popular catchy first paragraph. Yeah.
only if it is really catchy, then you can leave it. So I will show you an example of a catchy paragraph and let you ask if this is, I mean, let's see how it looks like. Yeah, wait. So let's see a catchy, every popular first, I made a mistake here. Let's see a catchy popular first paragraph. Yeah. So if I read this, so it reads something like this. I was first awed by the science when I was in grade 2 when my father bought a toy boat for me which worked on the principle of steam engine. It sucked water from one of small pipes beneath it and a small flame, and a little flame in its heart used to convert the water into steam, which was thrust out of the other adjacent channel, and hence the boat moved forward into the little tub of water, making a funny little put-put sound. Very nice one, yeah? Yeah, I like it. It says, then science is my favorite subject. Okay, so what is wrong with this paragraph? It's a very nice one. It's one of the better examples that I could pick. अच्छा, मैंने बिल्कुल जो नॉनसेंस किसिंग की एग्जांपल हो वो मैंने नहीं उठाई, मैंने वो एग्जांपल उठाई है जो फिर भी थोड़ी अच्छी वाली हो, but still it is not a good one. Why? Because you can read the comment here. Yeah, this kind of toy every child played with, every child went into awe and surprise. It's not a remarkable story. So if it is not, do you think a professor or a reviewer with very limited time might be interested in reading this? I can tell you he won't be. This whole paragraph takes minutes to read, and what does it tell the reader about the suitability of you for this PhD position or master's position? Nothing. I would delete the whole paragraph, right? So the question is, जो आप story बता रहे हैं, that is actually not really catchy because most of the people went through this. I was a kid. Unless, for example, if you can relate this, for example, now you're going to apply for something which is like you're studying a program which somehow involves developing steam engines, for example. Now this has a relevance. So maybe you can somehow figure out a way to actually translate this little story that you have mentioned here into something more concrete, as in how it actually helped you develop such an inspirational interest in the field of developing steam engine, for example, or thermodynamics or something like that. Okay, so ये बड़ा important है कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, सही है? So all right, so okay, so avoid the very popular catchy first paragraph until it is really catchy, and most of your SOP should contain factual statements about your skills, knowledge, and previous relevant experience, and how all of this conclude to make you a great candidate for the program you're applying to. So factual statements on say, I did this, and this was the result of that thing. I did research with Professor Ataur Rahman, for example, and we produced a journal paper titled this. This is factual stuff. This is facts. Things like, I'm very hardworking and I have interest in this, and I did this and this, and I did volunteer work with no reference to what volunteer work, right? So the thing is that you have to mention facts. Fact checking. It's kind of like if you guys are watching the US presidential election, अगर उसको follow करते हैं, तो lots of people talk about fact checking. What is fact checking? That somebody, when he reads your essay, can actually figure out if you can really spot something factual or it is just a statement with no proof whatsoever. तो proof के लिए ये नहीं है कि आपने proof के लिए कोई साथ letters या certificates लगाने होते हैं. What you are saying should actually make sense. It should have names, titles, things like that, not just generic words or yeah, things like that. Yeah. So write only things that are relevant for the position. Do not waste precious space. So space is precious. You have only 1 or 2 pages. Often you are given a certain number of words that you can write, or there's a limit on words or pages. So you cannot actually use up that space to write stuff which is not relevant for this particular application. So one of the most valuable skills is the ability to say or write most in the least possible words.
राइट? सो ये एक बड़ी वैल्यूबल स्किल है कि आप कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे करते हैं। वो जो गालिब ने मोमिन से कहा था कि ये जो एक शेर मेरा है आपका है, ये मुझे दे दो और पूरा दीवान ले लो। हम लोगों ने ये स्टोरी तो सुनी है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसने इस तरह क्यों कहा। उसने इस तरह यूं कहा, इसलिए कहा कि वो छोटे से एक शेर के अंदर बहुत बड़ी दुनिया कहती थी। मोमिन ने, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। सही है, तो थोड़ी सी शायरी भी हो गई है। ये जो चीज थी इसके अंदर, यानी आपने बहुत सारी चीज जो है वो छोटे अल्फाज में कहती है। ये सब चीजों के लिए एप्लीकेबल है, ह्यूमर के लिए फॉर एग्जांपल, या सब चीजों के लिए। सो ये एक स्किल होती है, ये आपने सीखनी होती है। So what you have done so far in education, work, other things that makes you a good candidate for this program. And very important thing is, what are your relevant and outstanding skills that will help you succeed in this program? ये चीजें आपने जरूर लिखनी है। What are your future plans? ये एक चीज होती है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। किसी ने नहीं लिखा होता कि भाई मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या, मैं क्यों इस प्रोग्राम को स्टडी करना चाहता हूँ, ये मुझे क्या बनाएगा, यानी मुझे मेरे अंदर क्या स्किल्स ये डेवलप करेगा, या मुझे क्या एक्सपीरियंस ये देगा जो आगे जाके मेरे फ्यूचर प्लान्स में मुझे काम देगा। ये चीज सब लोग, ज्यादातर लोग ये मिस कर देते हैं। लोग सिर्फ ये कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूं, मुझे दाखिला दे दें, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरा ये वो फला 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 फला। ये नहीं पता होता कि मैं ये काम करके, ये प्रोग्राम पढ़ के मैं क्या भला बनूंगा और मुझे क्या फायदा होगा, मैं लोगों की जिंदगी में क्या कर लूंगा, या मैं टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर लूंगा, या मैं साइंस के लिए क्या कर लूंगा। और जो चीज हमेशा मिसिंग होती है वो होती है, हाउ मच डू यू नो अबाउट द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू, हाउ वेल यू नो अबाउट द कोर्सेज यू विल स्टडी, द लैब्स यू विल पार्टिसिपेट इन, the city you will be going to, the professor you will be working with. तो आपने ये बताना होता है कि मैं जहां जा रहा हूं उसके बारे में मैंने कितनी रिसर्च की है। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं मैं बड़ा अच्छा मेंबर हूं, मुझे आप ले लें, मैंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन आप उनको ये नहीं बताते कि मैं आपकी कंपनी के बारे में क्या जानता हूं, कि आप कैसे, किस किस्म के प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, आपके प्रोसेसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह, तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। राइट? सो इधर राइट साइड में मैं देख रहा हूं तो बहुत सारी चैट चल रही है। शुरू में हमने 3 तरह के लोगों को कहा था। हमने कहा था कि जो लोग ज्यादा चैट करेंगे वो इसको ज्वाइन ना करें। तो आप लोग तो बहुत ज्यादा काफी चैट हो रही है, ठीक है। तो अभी जरा होल्ड पे रखें, डू नॉट मेक इट, बिकॉज देन यू टेक द फोकस अवे। लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्ट रीडिंग दिस चैट and then they cannot focus what I'm saying, and so that's why it's important that you guys focus here what I'm saying, right? So we already discussed this catchy first paragraph. So some more things. Check out if there's any restrictions on the length of the essay, right? अगर कोई लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 2 पेजेस का लिखना है या 2000 वर्ड्स का लिखना है, तो आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, उसी के अंदर लिखें। क्योंकि ऑफन लोग आपको ये भी जज करना चाहते हैं कि इफ इन दिस स्पेस कैन यू एक्चुअली रियली मार्केट योरसेल्फ, तो आपने ये बताना होता है। सही है? And then look, there's a famous saying. Woodrow Wilson was a very famous speaker. And once he gave a following reply to a speaking request. Somebody asked him that send him an invitation to speak. So this is what actually he said, that if you would like me to speak for 5 minutes, I will need a month to prepare. See? And if you would like to speak me for 20 minutes, I will need 2 weeks. But if you would like me to speak for an hour, I am ready right now. Right? So that actually explains that if you have a lot of time or a lot of space to write or a lot of time to speak, you actually need no preparation. Most of the normal people, have the ability to write, speak in lots of space. It's actually, the real skill is to write or things in small space or speak things in small time. Yeah? Yeah? So that's the skill. So good essays are concise and short,
hence difficult to write and consume more time. So challenge yourself to cut as many words as possible from each sentence without losing the line's meaning. This is a good challenge. And challenge yourself to cut or remove sentences without losing the meaning of the paragraph. And it is always, हमेशा बड़ा अफसोस होता है, ओहो ये तो मैंने इतना अच्छा पैराग्राफ लिखा था, मैंने इतना अच्छा सेंटेंस था, तो मैं क्यों क्या कहते हैं उसको, मैं क्यों इसको कट करूं, ये तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आपको हटाना पड़ता है क्योंकि आपको it's a trade-off. You have to actually only write things which are relevant, and you have to write things as long as the space permits. Some more things, because motivational essays are most important things. So do not overkill the reader by throwing in dozens of adjectives and adverbs. बड़ी लोग कहते हैं कि a good essay is actually a combination of very thick vocabulary, for example. अब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी महंगे अल्फाज इस essay के अंदर लिख दूंगा तो ये तो बड़ा अच्छा essay बन जाएगा. That is not true. Yeah, good essays do not need complex, thick vocabulary. Case closed. Right? If you can, as long as you really make good use of that word, that's a plus. But again, अगर आप लोग मिसाल के तौर पर, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है. अगर आप लोग यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, यूरोप में अगर आपके प्रोफेसर्स, they are not native English speakers, they are not comfortable with very complex English. So why do you make their life even more difficult? उनको अगर समझ ना आए आपके इधर उधर GRE की बुक से उठाए हुए वर्ड्स पढ़ने का, so you don't have to sound Shakespeare. Just write simple, nicely constructed sentences that make clear sense. Yeah. If you use fancy words to make complex but senseless sentences, you lose. ये होता है, लोग ऐसे words इस्तेमाल कर लेते हैं, बस उन्होंने कहीं सुना होता है, and words do make they're used in different contexts, right? So एक word के बेतहाशा synonyms होते हैं. आपको जरूरी नहीं है कि आप उस महंगे तरीन synonym को या मुश्किल तरीन synonym को उठा के उसको use करें. That synonym probably will have a different context for utilization. Yeah. Be yourself. Your essay is a virtual interview of yourself. Write what is true. Do not copy others. Do not mention non-coherent things. Right? Do not consider your essay a burden. Enjoy writing it. So, अगर आप enjoy करेंगे तो आपको मजा आएगा लिखने में और आप सीखेंगे भी. And finally, proofread your letter. Let other people read it and make sure it is good enough and free of errors before you send it off. अक्सर लोग मुझे भी भेज देते हैं और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अल्लाह पहले किसी बहन भाई से ही पढ़वा लेता है तो बहुत बकवास लिखा हुआ. तो आप अगर किसी को भेजें और स्पेशली अगर आप वाकई उसको फाइनल उसका वर्जन भेज रहे हैं तो उसको तो आप कोई 10 बंदों से पढ़वाएं, खुद उसको बैठ के दोबारा से पढ़ें, हर सेंटेंस देखें क्या मैंने ग्रामर सही है, मैंने क्या कहते हैं उसको पंक्चुएशन सही इस्तेमाल की है, मेरा कहीं कोई कामा तो मिसिंग नहीं है, वगैरह वगैरह. मैंने ये आप अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव करें. टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स. नेक्स्ट थिंग, ये तो हमारा एसओपी होगा. अगर आपके पास सवाल है तो हम एंड में उसको लेंगे. अभी हम आते हैं जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिकमेंडेशन लेटर्स या जिनको लोग रेफरेंस लेटर्स भी कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं. सही. सो व्हाट इज अ रिकमेंडेशन लेटर? A recommendation letter is a testimonial from another person testifying that what you state in your resume or motivational essay or similar is true and authentic. Yeah? So एक रेफरेंस लेटर ये बताता है कि आपने जो क्लेम किए हैं ना कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है रेज्यूमे में या मोटिवेशनल लेटर में या इधर उधर आपने कुछ क्लेम्स किए हुए हैं, कुछ पार्ट ऑफ उसका कुछ पार्ट जो है वो सपोर्ट होता है किसी और बंदे की आवाज से, वो आप लिखते हैं. सही है. सो आप who should you get it from? So या तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं. सही है. या आप अपने प्रोफेसर से लिखते हैं या प्रोफेशनल मेंटर से लिखते हैं. द रीसेंट द बेटर. लेकिन ये मसला ये कि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए और 4 साल आपने जॉब की और रिकमेंडेशन लेटर आप 4 साल पुराना प्रोफेसर से लिया होना चाहते हैं, डज नॉट मेक दैट मच सेंस. रीसेंट लें किसी से जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ उनसे. Should I get a letter from a professor who is a PhD or from a teacher who taught me mathematics?
Yeah. So think about who can give you solid and useful letter. What is useful? I marked it bold here. So useful letter जो है वो क्या चीज है? हम इस पे बात करेंगे अभी अगली स्लाइड में. सही है. लेकिन आपका पर्पस ये है कि आप एक लेटर ऐसे बंदे से लें जो आपको यूजफुल लेटर दे सके, जो वाकई काम का लेटर हो. वर्क विद प्रोफेसर और एम्प्लॉयर्स एंड ट्राई टू डू समथिंग टुगेदर सो दैट योर रेफरी can reflect on his experience working with you. Yeah, so he can actually reflect on this. So let's look at an example of a recommendation letter. So most recommendation letters are awful. Look at this. Miss ABC is hardworking and diligent student. I taught her fundamental of economics and I found her very intelligent. She got A grade in my course. She is time punctual. She has great management skills. She exhibited leadership skills. I strongly recommend her for admission for postgrad program. Now, what is wrong with is it a good recommendation letter? No, just don't write good recommendation letter. Write in the chat box, write why it is not a good recommendation letter. What is missing? I'm happy most of the people are online, you know, they just, बहुत सारे लोगों को वाकई के देख रहे हैं कि क्यों है कि अच्छा subject is not clear, skill, it does not say about skills, blah blah blah. These are skills now, time punctual, management skills, etc. But I will show you why it is not a good recommendation letter. Yeah. So the problem with this is she is time punctual. See, no factual statement. What is the proof of what is highlighted above? In this letter, there's no proof that how she was time punctual and how she has great management skills or how she exhibited leadership skills. It looks like it's just a bunch of lies because there's no proof. How would you bring up proof? Yeah. Yeah. So such a recommendation letter is counterproductive. It means you did nothing useful with someone that you could provide as a support. Your referee also appears to be a liar. Yeah. Yeah. So when I say useful recommendation letter, I don't mean that it should have a subject. Lots of you said कि इसमें subject missing है. Subject is not even required. Subject ये चीजें important नहीं होती कि आपने नाम ऊपर क्या लिखा है या subject या to whom it may concern लिखा है या किसी उसको direct किया. Content important है कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है. Yeah. Description, for example, none of these things really matter. What matters is that does it really speak about this person's personal experience with the referee, and if they worked together and if they interacted, what kind of skills were highlighted, exhibited, and how? This is the question. Yeah. Yeah. So, for example, now I'm going to show you a good letter, for example. And look at this one. Mr. Byrne worked with me in image processing lab. Yeah. One of the projects in our lab was to detect cancer blobs in X-ray images. We developed, okay, I changed my name here, but okay. We developed an algorithm using wavelet techniques that we wanted to evaluate for its performance against the state-of-the-art agent blob detection algorithms. Rizwan implemented the algorithm in MATLAB and also designed test cases scenario for testing large amount of X-ray data. During his work, he faced problems of importing codes of other algorithms into MATLAB from languages such as C++. Rizwan exhibited great dedication and hard work to finish the job and help us get the results. Our work resulted into 2 publications, one of which was published in the IEEE Signal Processing Letters with the title A Novel Method of Detecting Cancer Blobs in X-ray images using wavelets. Look at this one. Now this letter has it's a story of a personal interaction and a work together exhibiting certain skills. For example, this guy did not say this one is good with, I changed my name but in the beginning but didn't change in the middle, but it does not say that. For example, this guy doesn't say Rizwan is intelligent, he's hardworking, he's very smart, blah blah blah.
He says this with words. He says this with statements, factual statements, that Rizwan implemented the algorithm in MATLAB. What algorithm? There's a name of the algorithm, and also so it is kind of a full detailed analysis of what I did with this professor. So you see, this looks genuine. It looks full of content. It looks full of authenticity and genuine. It looks genuine. So this is how a good recommendation letter is. Usually when I receive something, okay, the question is, you think most of the professors, they cannot write you good, they cannot, because first of all, you have not done things with them. So you have to do things with them. That's how you get a good recommendation letter. And secondly, if you get a good recommendation letter, I mean, how you get a good recommendation? Because you have to help these people. Maybe this is on the next slide, is that you have to help these people write a good recommendation letter for you. See? So ask people to give you references which are genuine. Work with them, work with professors and employers. Acquire skills that you can put in your recommendation letters. You not only acquire the skill, but also make a contact with a potential referee. And see if you can get a letter from a PhD or a head of your team if you're doing a job. See if the referees are Googleable. Are they known? If so, good. But do not compromise on the quality of the content and the content of the letter. So do not. Yes, Bern and Rizwan is the same person. I changed Rizwan in the beginning and forgot to change in the middle. So now you see two different names. So you have to help your referees to write the letter for you. Don't just ask them कि मेरे लिए letter लिखते हैं. वो उनको पता ही नहीं होगा क्या लिखें. वो फिर यही लिखेंगे कि she's very hardworking, she's this and that and all that. So आपने उनको हेल्प करना. आप कहते हैं सर मेरे लेटर में काइंडली इस चीज पे रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा. मैंने ये छोटा सा ये प्रोजेक्ट किया है. इस ये प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड है जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए. तो काइंडली इसका रेफर कर दीजिएगा. या उनके साथ जाके 1 महीना काम कर लें. अगर आपने अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखा उसको जाके प्रोफेसर से कि मैंने आपके साथ रिसर्च करनी क्यों कर ले, आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे कोई रिसर्च टॉपिक दे, मैं आपके लिए कुछ काम साथ कर लेता हूँ. तो फिर आप उससे रिकमेंडेशन लेटर भी ले लें. इतना मुश्किल तो नहीं है. अगर आप किया कुछ ना हो जाके कहेंगे फिर तो जाहिर है आपको अच्छी चीज नहीं मिलेगी ना. सो उनको हेल्प करें लिखने में, या उनको लिख के दें कि सर ये वाला साइन आप कर दें. आप लिख के दें, लिखें आप उस हिसाब से जैसे आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए होता है. फाइनली लास्ट टॉपिक जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है. सो मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ आइल्स और टोफल. लोग कहते हैं मैं आइल्स टोफल कैसे करूंगी, तो मुझे तो आता ही नहीं है. ये बड़े आसान टेस्ट हैं, कुछ भी नहीं होता है इसमें. इफ यू कैन जेन्युइनली इंस्टिल एन इंटरेस्ट इन यू टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, उन लोगों के लिए बड़े आसान थे जो वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. वो कहते हैं हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें, अच्छी अंग्रेजी जो है वो हम पढ़ सकें, मुश्किल अंग्रेजी पढ़ सकें, समझ सकें. जो लोग ये काम करना चाहते हैं उनके लिए आइल्स का कोई मसला नहीं आता. उनको तैयारी नहीं करना पड़ता. वो तो बस उनको आता है अंग्रेजी. टेस्ट जो होता है वो तो इस काम का है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं. जब आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो टेस्ट आप पास कर लेंगे ना. सो इफ यू ओनली वांट टू गेट डन विद आइल्स यू मे, बट थिंक अबाउट इट. इफ यू कुड रियली हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इट इज अ ग्रेट स्किल. So is learning other foreign languages. अगर आप अपने रेज़्यूमे पे लिख देते हैं कि मुझे फ्रेंच आती है, फॉर एग्जांपल, स्पेनिश आती है, अरेबिक आती है, फॉर एग्जांपल, ये कितना बड़ा एडवांटेज. इट्स अ स्किल. It's a great skill. So you should think about learning languages as really learning languages. You can't just say, oh मैंने सिर्फ IELTS पास करना है, उसके लिए मुझे बाहर आके. हम पाकिस्तानियों की बड़ी थकी हुई अंग्रेजी होती है, टू बी ऑनेस्ट. बावजूद इसके कि हम पाकिस्तान में बड़े शौक से बोलते हैं. आप सुपरमार्केट चले जाते हैं, वहां बेचारे को पता ही नहीं रहता, सुपरमार्केट वाले के साथ हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं. वेटर को हम ऑर्डर अंग्रेजी में देते हैं. डज नॉट इवन मेक सेंस. बट व्हेन इट रियली मैटर्स, व्हेन वी कम अब्रॉड एंड वी लुक एट आवर इंग्लिश इज रियली टेरिबल. सो डू बोथ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, लर्न लैंग्वेज, respect your languages there, respect people there. Don't speak foreign language with normal people. आप लोगों के साथ ना बोलें. But as a language इसको सीखें कि यार ये एक नई ज़बान है, मैं इसको सीखना चाहता हूँ. So how do you do this? How do you do this? You start today. Learning languages, you just start today. You read books.
novels, fictions, you watch movies with intent to grasp words and phrases and dialogue. That's how you learn it. So आपने अंग्रेजी को सीखने के लिए मूवीज आप सिर्फ ये स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे, आप मूवीज ये देखेंगे कि मुझे सारा डायलॉग समझ आए, मैं इसके अंदर वर्ड्स पिक कर सकूं, समझ सकूं, आपका अंग्रेजी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी. वरना आप इधर उधर से बुक एक उठाएंगे कि मैं आयल्स के लिए तैयार कर लूं, आयल्स भी बड़ी मुश्किल से आप करेंगे लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, आपको लैंग्वेज आपकी कहीं नहीं जाएगी. And there is no other method more efficient to learn a language than to speak. Try to plan speaking sessions with family and friends, but please don't speak it with the waiter in the restaurant. That's rude because you might not be comfortable. Right? So, अपने घर वालों को रात को खाने के टाइम पे कहें जी, let's practice English, for example. Just start speaking English with every single other person in the house. I mean, so that it gives you more confidence and gives you more more time to prepare. Yeah. So scholarships are won. These are final remarks. And scholarships are won by enjoying the process of applying, by showing persistence and the willingness to improve. Make it a hobby to write SOP, acquire skills, and most importantly, apply, and apply. How cool it would be that by May next year or the next year, you have 5 scholarships to choose from. Yeah. So the key to success here is to actually prepare yourself to apply. बहुत सारे लोग, मुझे बड़ी अफसोस होता है जब लोग कहते हैं सर मैं क्या करूं, भाई कितनी जगह अप्लाई किया, सर अभी किया तो नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? अप्लाई एक जगह भी नहीं किया, फ्रस्ट्रेट होकर बैठे रहते हो, फायदा क्या हुआ? Sorry. Okay. So the result is कि आप अप्लाई करें, दबा के अप्लाई करें, जितनी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें, तब जाके आपको जाके बहुत सारी ऑप्शंस पे उसके बाद नजर आएंगी, फिर आप उसके अंदर जो है तो वो चूज करें. या सो ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है. क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं लेकिन अभी ना पूछें, पहले ये पढ़ लें कि यू कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट section of this tool. Write question as short as possible. Practice being concise. या जो अभी हमने पूछा है ना, तभी हमने बहुत सारा बात की है कि कंसाइज कैसे होना चाहिए, शॉर्ट कैसे लिखना चाहिए, वो आप अपने क्वेश्चंस में भी वही चीज रिफ्लेक्ट करें. Do not ask too many questions. Give others a chance as well. A lot of questions are Googleable. Have you done so? Go ahead. So मेरे ख्याल में वकार हमारे साथ शायद अभी भी नहीं है, वो लॉग इन नहीं कर सके. I think so. लेकिन आप लोग सवाल पूछें अगर आपके कुछ सवाल थे. अगर आपने पहले पूछे हैं तो वो मैं नहीं पढ़ सका अनफॉर्चुनेटली, तो लेकिन ओके. सो आई विल मैं भी देखता हूँ आपके क्वेश्चंस. उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल नहीं होंगे. जरा ये इधर लगा देते हैं. बहुत सारे होंगे. अगर अभी कोई क्वेश्चन ना लिखें क्योंकि मैं फिर स्क्रॉल अप करूंगा तो फिर नीचे चला जाता है, तो आप लोग अभी थोड़ा सा. सर प्लीज एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल एज यू डिड नॉट एक्सप्लेन. रिसर्च प्रपोजल यूजुअली लोग इस पे बहुत सारा टाइम लगाते हैं. रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स के लिए नॉर्मली नहीं चाहिए होता. रिसर्च प्रपोजल का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज लिखें जिसके ऊपर आप फंडिंग ले सकें, और आप लोग फंडिंग यानी आप एक प्रोजेक्ट फंड करवा सकें, इसके लिए नहीं चाहिए होता. लोग इस पे बहुत टाइम, अगर आप लिखते हैं उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि आप लोग अगर वो किसी को दिखाएं तो वो आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के ऊपर या आपके रिसर्च का जो इंस्पिरेशन है उस पर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक अच्छी चीज है. इसलिए अगर आपके पास जेन्युइनली आप लिख सकते हैं कि आप
जेन्युइनली कोई आइडिया आप डिस्कस कर सकते हैं और उसमें अंदर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू को बता सकते हैं, तो वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, अब बिल्कुल उस पर काम कर सकते हैं, एक प्लस है, ये एक एडिशनल टॉपिक, एडिशनल चीज है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि इसके बगैर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई ना कर सकें। मास्टर्स के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए होता। अल्लाह करे मैं आप प्लीज ना लिखें और सवाल, ताकि मैं ऊपर जाके देख सकूं इसको। मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकता जब तक आप सवाल लिखते रहेंगे, वो फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। Kindly do not write any more questions. अच्छा, ये माहम फातिमा का क्वेश्चन है कि learning, I have a few questions. Learning languages impacts the application. Absolutely. If you can speak more languages, you're a more interesting candidate. If my intended country is Germany, and I learn it, does it improve? Absolutely. Yes, it improves your application. I hold masters. Applying to Erasmus with this is wise or not? Yes, it is wise. Reflect on everything you have said, but mention why you have done a previous masters and what makes you feel that you should study another masters. Yeah. महबूब अहमद का क्वेश्चन है, शुड बी इंक्लूड रिलेटेड बैकग्राउंड अबाउट प्रोग्राम। हमने बात ही सारी इस पे की है कि आपने रिलेटेड बैकग्राउंड जो है वही बताना होता है प्रोग्राम के अंदर। सो सर प्लीज do not type any more questions. प्लीज डू नॉट ट्राई, वो ऊपर वाले क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं, प्लीज ना लिखें आप क्वेश्चंस मजीद। सर प्लीज टेल मी अबाउट अंडरग्रेड प्रोग्राम। अंडरग्रेड प्रोग्राम जो है उसके लिए भी यही, मतलब अगर आप, वो ज्यादातर ये होता है कि अगर आप इंग्लैंड वगैरह जाना चाहते हैं अपने खर्चे पे, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मशवरा ही दूंगा कि आप ब्रिटिश काउंसिल के पास जाएं, उनसे पूछें वो आपको, क्योंकि अंडरग्रेड एजुकेशन मीन्स कि वो एक बिजनेस के तौर पे सामने आता है, तो वो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। आपको ये एसेस वगैरह इतने हाई क्लास नहीं लिखने पड़ते। या खुदाया, ये हुमैरा आपकी मैं पढ़ चुका हूँ आपको, काइंडली आप जरा सब्र करें, मजीद क्वेश्चंस ना लिखें वरना वो ऊपर वाले क्वेश्चंस गायब हो रहे हैं। इज इट इम्पोर्टेंट यू रेफरी हैव एन ऑफिशियल ईमेल? यस, अगर आपके रेफरी के पास जीमेल या हॉटमेल का अकाउंट है, वो बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप नहीं है फिर तो आपकी मजबूरी है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि सारी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज के अपने ईमेल्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, या लोग तरीके निकालते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो अपने उस ऑफिशियल ईमेल से आपका सबमिट करें, आपका जो वो है, सही है। बेदार बात कहते हैं, कैन वी अप्लाई फॉर एडमिशन यूजिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट? ये डिपेंड करता है आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर देखें उनकी वेबसाइट पे कि उन्होंने क्या मांगा हुआ है। उन्होंने क्या मांगा हुआ है, अगर उन्होंने मांगा हुआ आइल्स और टोफल, उनसे पूछेंगे क्या, ईमेल करके पूछेंगे क्या है, एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, सही है। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी चल जाएगा तो सबमिट कर दें, नहीं तो आपको करना पड़ेगा यार। अच्छा हाँ, हमारे कहते हैं जो ईमेल ये एंड में आएगा, प्लीज गिव सम गुड सैंपल रेज्यूमे एसओपी। ये हमारे आप ग्रुप पे जाएं, स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी हैं और एरास्मस मुंडस एसोसिएशन के ग्रुप पे भी मौजूद हैं सैंपल्स, वहां से आप उठा सकते हैं। प्लीज डू नॉट राइट एनी मोर क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं पिछले वाले गायब हो रहे हैं, मैं वो नहीं पढ़ सकता। हाउ लॉन्ग शुड बी अ क्वालिटी एप्लीकेशन? क्वालिटी एप्लीकेशन जब हमने कहा था वो तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स थे ना, वो तो उसमें तो सब कुछ आता है। अगर आपका सवाल ये है कि एक अच्छा मोटिवेशन लेटर जो है उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या कोई रिक्वायरमेंट देख। यूजुअली मेरे ख्याल से 2 पेज, अगर नहीं लिखा हुआ कि कितना लंबा होना चाहिए तो 2 पेज से लंबा नहीं होना चाहिए। माहम तनवीर कहती है, इज इट अ गुड आइडिया टू मेक एसओपी candid and natural as opposed to strictly professional? I don't know, what do you mean by strictly professional or candid? Of course, a letter should be something which gives you a good feeling and something which you think make you stand out.
जो ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के आपको आपका रिव्यूअर कह सके कि दिस वाज अ नाइस nicely constructed things. Yeah. सर प्लीज टेल अब ये सेम ही सवाल कितनी दफा पूछे इन लोगों ने. सर व्हाट आर सम मस्ट हैव्स फॉर एमएस इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग. डेटा साइंस ये तो एक बड़ा डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया है. ये तो आप इसको तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपको जाहिर सी बात है अगर मशीन लर्निंग की जो बेसिक्स है वो आपको आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए. ये तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि मैंने इसमें काम किया हुआ है, वरना ये होता है कि आपने आप देखें डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स ठीक है, प्रोबेबिलिटी सही है, मशीन लर्निंग ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं. इसको इस पे देखिए सही है. शुड आई मेंशन द नेम ऑफ कंपनी इन व्हिच आई वर्क इन. हाँ बिल्कुल, अनलेस के मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मसला है, आप जरूर बता सकते हैं. What should be the first paragraph in motivational essay? Then I'll leave you to figure out कि आपने लेटर कैसे लिखना है. आप लिख भी सकते हैं कि I am मतलब कोई आपके पास कोई कैची पैराग्राफ है until is very good वो लिखें. अदरवाइज कुछ भी ना लिखें. ये लिखते हैं I have a bachelor's degree in mass communication and I want to pursue for this program because I bring these kind of things. मतलब ये आप सबसे पहले तो आप एक अच्छे evaluator हो सकते हैं कि मैंने जो चीज लिखा है does it give a good first read कि मैं बंदे को पहला पैराग्राफ पढ़ के पता चला कि मुझे अगला पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या नहीं. Sir, I want to ask you about the CV that you said. It should be 1 page and you also said you should have experiences of other stuff too. If I'm writing all my experience then it would be long. तो आप जरा experiences कम कर दें. Just mention maximum 3 jobs or the most relevant jobs. Do not mention all other jobs. Yeah? और एक लाइन में बता दें. ठीक है. अगर आप एक लाइन में बता सकते हैं किसी जॉब एक्सपीरियंस के बारे में तो बता दें. बाजू का आप यूं भी कर सकते हैं कि आप पेज के इंडेंटेशन थोड़े कम कर देते हैं, मार्जिन्स थोड़े कम कर देते हैं, फॉन्ट ऐसा चूज करते हैं जिससे आप ज्यादा, टेम्पलेट ऐसा चूज करते हैं जिससे आप ज्यादा चीजें मेंशन कर सकते हैं सीवी के ऊपर. और अगेन सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीजें जो उस चीज के अंदर रेलेवेंट है वो आप चूज करें. सारा कुछ ना लिखें. हर बंदे का दिल करता है मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन उससे फायदा नहीं होता. इसलिए आप एक पेज से नहीं होता, 2 पेजेस से कभी भी ज्यादा ना करें. यार मैंने देखा किसी ने कहा मेरी 7 पेजेस. आपको वाकई लगता है कोई बंदा मैं तो किसी का 7 पेजेस का सीवी नहीं पढ़ूंगा. आपको लगता है कि आप पढ़ लेंगे? मेरे ख्याल तो नहीं है. मुझे हर दफा ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि आप लोग सवाल फिर भी लिख रहे हैं. अगर आप लोग ये काम ना करें तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी. अगला सवाल है I am doing MPhil, want to do PhD, but many people say that I must do masters first, then apply for PhD. Depend करता है. अगर आप PhD के अंदर अगर आपने अभी तक आपकी जो प्रोफाइल उसमें आपका एक अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है या आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. डिपेंड ये करता है कि आपके पास आप जो क्या वो स्किल PhD में जो स्किल चाहिए होती है वो आपको रिसर्च करने की स्किल चाहिए थी. वो अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपने एक्वायर की है, वो कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं या कोई आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा है जिसके ऊपर आपको फंडिंग मिली है मिसाल के तौर पर, या तो उस चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं. Can we apply to totally different programs in Erasmus Mundus like in management and engineering both? Absolutely, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट बनाएं. ये अनम का ये क्वेश्चन है. एप्लीकेशन दोनों की टेलर्ड हो, ये ना हो कि एक ही एप्लीकेशन दोनों के लिए भेज दें. दोनों को अपने तरीके से बनाए और सबमिट कर दें. बिल्कुल आप कर सकते हैं. हाउ कैन आई मोटिवेट अ प्रोफेसर? उसको चॉकलेट्स भेज दें रोजाना. ऐसे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है. मुझे नहीं पता किस बात का क्या यदि सवाल का मैं समझ नहीं है कि मोटिवेट प्रोफेसर क्यों करना. वो तो मोटिवेटेड ही होगा. अगला क्वेश्चन है आफ्टर डूइंग मास्टर्स बाय Erasmus Plus do we get work permit work in Europe? वर्क परमिट आपको जॉब सर्च वीजा कुछ कंट्रीज में मिलता है. और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपको फिर हर कंट्री के अंदर जॉब वीजा तो सबको मिल जाता है. अगर आपको जॉब मिल जाए, कुछ कंट्रीज में जॉब सर्च वीजा भी मिलता है, तो वो आप देख लेंगे कहाँ से कौन कौन से मुल्क है, जैसे जर्मनी है या नेदरलैंड्स है या थिंक कुछ मुल्कों में मिलता है. काइंडली ना लिखें सवाल, हम जब नीचे पहुंच जाएंगे फिर आप मजीद कर सकते हैं. ठीक है.
सर वी कैन गेट द प्रेजेंटेशन एज अ गाइड। जी बिल्कुल, ये आपको मिल जाएगी, हम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुड मेंशन सब्जेक्ट्स इन सीवी और जस्ट बीए सोशल साइंसेज। वही बात हुई कि आप बीए सोशल साइंसेज में सब्जेक्ट एज अ स्किल लिखें या स्किल्स लिखें, लेकिन सब्जेक्ट को आप भी एज अ स्किल्स लिख सकते हैं। अगर आप अभी बैचलर्स किए तो ऑब्वियसली आपने सीवी पे कुछ तो लिखना होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। खालिद सईद कहते हैं इज रेफरी डिटेल शुड बी इंक्लूडेड इन सीवी? नो, डिपेंड करता है। अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा, एक पेज का अगर आपने बनाना है तो फिर आप जाहिर सी बात है इसमें एक पेज को रखने के लिए आपको ये ओमिट करना होगा, और डाल भी सकते हैं। दिस इज अप टू योर टेस्ट कि आपका खुद दिल क्या करता है। इसलिए यू शुड आल्सो फॉलो व्हाट योर गट फीलिंग इज, ताकि आप, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। should mention subjects in CV or apply for adult education। आपने relevant बनाना है चीजों को, कि relevant कैसे हो, वो आप देख लेंगे कैसे करते हैं। I need admission in Germany but I have very low CGPA 2, will I get admission in Germany? सिर्फ अगर 2.33 GPA है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर साथ आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है और ठीक है, और पाकिस्तान में, और वो आप $2 मिलियन का हो गया, फिर आपको जरूर एडमिशन मिलेगा, मिसाल के तौर पर। या आपने कोई पब्लिकेशन लिखी है, सही है, या आपने वही कराची से मॉस्को बाईसाइकिल पे गए, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए 2.33 के अलावा, तब हो जाएगा। I am a former undergrad alumni, UGrad alumni. I don't know what UGrad alumni is. Can I mention that SOP will make positive impact? ये अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कि आप किसी, लेट्स से यूएस गए थे किसी छोटे एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो बिल्कुल सीवी में लिखें। इट मेक्स यू लुक एन वेरी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट। एरास्मस एक्सेप्ट इन जर्मनी? जी हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम एरास्मस में जर्मनी में भी इंक्लूडेड है उनमें, सही। फ्रॉम वेयर आई कैन वेरीफाई माई डॉक्यूमेंट्स व्हेन माई डिग्री इज इनकम्प्लीट? जिसने डॉक्यूमेंट्स दिए उधर से वेरीफाई करें। अगर डॉक्यूमेंट HSC ने दिए तो वही वेरीफाई करें, अगर डॉक्यूमेंट BCCISC ने दिए तो वो वेरीफाई करें। महक कहती है अच्छा ये हो गया। फ्रॉम वेयर आई कैन वेरीफाई, ये भी हो गया। हाउ मच इम्पैक्ट डज CGPA हैव ऑन एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम? इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट। मतलब ये वन ऑफ द थिंग्स है, हमने पहले इसको डिस्कस कर दिया है, ये एवरीथिंग नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा छोटा GPA है, बाकी प्रोफाइल कहीं और से स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फिर भी मिल सकता है, सही है। और अगर थोड़ा थोड़ा सब कुछ है फिर भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाते हैं। How much impact? अच्छा, 70% questions are Googleable. Please boys show some sense. Nice, thank you very much, Mohammad Amir Bashir. Aisha Kawal is asking, I also want to know about research proposal. We have also already spoke about that. I need your email, sir. Sir, it is required for, अच्छा, maybe it is required for next scholarship research proposal. तो मैं यही कह सकता हूँ कि research proposal पहले तो ये कि आप जिस फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं उसके कोई टॉपिक्स उठा के उनके पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स देखें, वहां से कोई आइडिया गैदर करें और लिखें। कोई आपको निकाल के नहीं देगा कि ये रिसर्च प्रपोजल है और ये आप, रिसर्च प्रपोजल बड़ी कीमती चीजें होती हैं। अगर किसी ने रिसर्च प्रपोजल लिखा है, इसका मतलब वो उस पर फंड अप्लाई कर सकता है, प्रोजेक्ट की से पैसे लेके वो काम कर सकता है। तो आपने बैठ के कुछ पेपर्स पढ़ने होंगे, तभी आप वो रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। फॉर्मेट उसका कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही कहते हैं कि दिस इज अ रिसर्च प्रपोजल, नीचे लिखते हैं कि इस पेपर में ये लिखा हुआ है, इस पेपर में बंदे ने इस बात पे काम किया, और मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों पेपर्स में जो काम किया हुआ है इसके ऊपर मजीद काम किया जा सकता है। इसको थोड़ा टेंजिबल बना के अगर आप लिख सकते हैं तो। हाउ इज द जॉब मार्केट इन पाकिस्तान आफ्टर मिस अब्रॉड? ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो नेदरलैंड्स में रहता हूँ। Should I apply directly from college or wait for a few months to write a research paper on my FYP? Sir, I have 4 papers. अभी आप अप्लाई करें तो आपको कोई रोकता नहीं है, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाहिर सी बात है आपका प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा आपने ये सवाल इतनी दफा पूछ लिया ईमेल, और आपने इतना चैटर प्रोड्यूस किया है कि मैं आपको अपना ईमेल नहीं दूंगा, ठीक है। I am my doing project with an MS teacher. How may I get recommendation letter from him? 100 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दें, तो कैसे एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें। अगर आप उसका प्रोजेक्ट करें तो उसको कह दें कि उसको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको। मेरा सवाल समझ नहीं आया सर, प्लीज। अच्छा, हाउ अबाउट RLB
specific. I refer. How much impact does कहाँ थे हम? अच्छा, how much university ranking matters in selecting universities? यानी आपका सवाल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हमने पहले जिनमें पढ़ा है उनकी रैंकिंग कितना मैटर करती है या जिनमें जा रहे हैं उनका मैटर करती है? अगर जिनमें पहले पढ़ा है वो पाकिस्तान मतलब बाहर यूनिवर्सिटीज उनको कुछ तो आइडिया होता है कि पाकिस्तान में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगेन कंटेंट पे आपकी एप्लीकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छी रही है तो आपको बिल्कुल मिलेगा एडमिशन। सर एसओपी फॉर ग्रेड में कोई टिप्स बता दें। ये हमने सारी जो टिप्स बताई हैं वो उसी के बारे में। आई डोंट हैव जॉब एक्सपीरियंस इन काज आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमएस। तो आप अपनी एप्लीकेशन को फिर जाहिर सी बात है और तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं, अपनी जो रिसेंट एजुकेशन है उसके बारे में बताएं, स्किल्स आपने जो एक्वायर की हैं उनके बारे में बताएं, इस तरह की चीजें। पता नहीं हम कहाँ पे थे। कैन वी गेट रिकॉर्ड कॉपी ऑफ दिस वेबिनार? जी आपको हम दे देंगे, ये हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। शुड वी यूज दीज थिंग्स इन ऐसे फॉर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स लाइक इंटर्नशिप? ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह अपने आप को एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बनाना है, और यही टिप्स उसके लिए भी यही है। ये इवन जॉब्स के लिए भी यही टिप्स हैं। कंटेंट डिफरेंट हो जाता है ना, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने होते, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखना होता, कवर लेटर लिखना होता है, लेकिन उसमें भी आपने रेलेवेंसी बतानी होती है। शामा फारूकी कहती हैं माय जीपीए इज 3.16 विद स्कॉलरशिप कैन आई गेट इजीली ऑल स्कॉलरशिप्स? just make work on your application, make it look interesting, and you can get every other scholarship that is there. Sarazan, I want to ask you about the CV that you said it should be one page, and you also said you should have experience of other stuff too. If I'm writing all my experience, then ये तो मैंने जवाब दे दिए। Yes, you can go on Erasmus exchange program on file। ये हमारे ग्रुप पे आप जाके पोस्ट चेक करें, वहां से आपको पता चल जाएगा। I am in conversation with German professor who is ready to give me acceptance letter for Erasmus. Can you please tell me what should be next step for, as I have seen specific program on Erasmus website? आप जाके Erasmus की जो वेबसाइट है उस पे चेक करें प्रोग्राम्स जिनमें आपने एडमिशन लेना है, और फिर जाके उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर दें। वेबसाइट से एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के दौरान आप ये जरूर कह सकते हैं कि मेरी किसी प्रोफेसर के साथ करस्पॉन्डेंस हुई है और मैं ऑलरेडी उनके साथ। ये बड़ा पॉजिटिव टॉपिक है, चीज है, ये आपको हो जाता है। ये एक अच्छा वो है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। डेली मिल्क चलेगा, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए कह रहे हैं। राबिया, आपका सवाल तो मुझे अब याद नहीं, आपने क्या सवाल पूछा था, लेकिन अब मैं क्या कहूँ। कैन आई गेट अ स्कॉलरशिप फॉर एमएस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद जीपीए लेस देन 2.5? जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया तो फिर मिल जाएगा, अगर सिर्फ इतना जीपीए है बाकी कुछ नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। टू गेट अ स्कॉलरशिप इट इज नेसेसरी टू गेट acceptance from a concerned university। ये डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप का तरीका ये है कि पहले आप बताएं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है। वो उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है, नहीं लिखा तो आप उनको ईमेल करके पूछें। और उसका तरीका मतलब अगर जिस तरह एरास्मस में ये कि आप एक कंसोर्शियम को अप्लाई करते हैं, एक ही एप्लीकेशन है, वो स्कॉलरशिप के लिए भी है और वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी है। तो अगर आपने ये वो किया है तो वो एक ही जगह आपकी एप्लीकेशन काउंट होगी। लेकिन साथ में आप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स या जिस लैब में आप जाएंगे उनके साथ पहले से करस्पॉन्डेंस करके उस करस्पॉन्डेंस का जिक्र अपनी एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। दिस एक्सप्लेन कि यू आर रियली इंटरेस्टेड और आप वाकई से ये प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं और इसके लिए प्रिपेयर्ड है। हाउ मच इंफॉर्मेशन डू आई इंक्लूड इन सीवी अबाउट माई, सारा खान का क्वेश्चन है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन डू आई इंक्लूड इन सीवी अबाउट माई प्रीवियस डिग्री, लाइक
only the degrees title and majors, or something else like I'm switching my field from social sciences to adult education? You did answer this, but I think you didn't get. मैं जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बाकी वर्क मास्टर्स आपने किया नहीं है, सिर्फ आपके पास बैचलर्स एजुकेशन है, थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, कोर्सेज लिखते हैं, लेकिन उनमें वो कोर्सेज जरूर लिखें जिनका समहाउ, चूंकि सोशल साइंसेज है तो जाहिर सी बात है एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड कुछ तो एजुकेशन, कुछ तो प्रीवियस कोर्सेज होंगे, या कोई 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 असाइनमेंट्स होंगी, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई आपने इंटर्नशिप या कुछ इस तरह का काम किया, किसी प्रोफेसर के साथ कोई काम किया होगा जो एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप उसको मेंशन करें उसमें। सही है, मैं आपको क्लोज आंसर्स नहीं दे सकता कि आप उसमें क्या लिखें, मैं आपको ये लिख सकता हूँ कि आप किस एरिया, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है तो वो लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। One question, shall we submit all the documents? Shall we submit all the documents even if they haven't asked an application process, or discouraged to enclose like experience letter, answer, recommendation letter? अगर किस चीज से डिस्करेज किया हुआ है और कहा कि ना भेजें, फिर ना भेजें, और ना आप भेज सकते हैं सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स फॉर एग्जांपल, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कासिम अली का क्वेश्चन है, फॉर स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स रिक्वायर्ड 300 आवर्स फुल टाइम, पार्ट टाइम, वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस, डज यूनिवर्सिटी सोशल लेटर इज सफिशिएंट? मुझे सवाल तो सही तरीके से लिख लें भाई। For Swedish Institute scholarship required 300 hours full time, part time work. बंदा कोई पंक्चुएशन मार्क ही यूज कर लेता है अपने क्वेश्चन में। I don't know if society work letter is not sufficient. You should have worked outside the university. उन्होंने 300 घंटे का मांगा हुआ है, तो बाहर से कहीं कोई लेटर आपने बनवाएं और कहीं काम करें जाके। Is it okay to discuss research methodology in ML? यार ये तो domain specific questions हैं, ये कहीं और से देखें आप। Recommendation letters should be specific, like I refer Hassan to Hassan. No, it is not important. अगर तो ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके रिव्यूअर पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कि आपका प्रोफेसर रोजाना के हिसाब से आपको नहीं लिखे। अगर वो बंदा उसी यूनिवर्सिटी को लिख रहा है फिर तो उसका तस्करा करना आसान सी बात है, लेकिन आपके पास एक लेटर है जो आपने स्कैन किया हुआ है या जिसकी कॉपीज आप बेचते जा रहे हैं, तो वो उसमें जरूरी नहीं है कि आप हर यूनिवर्सिटी के लिए बनाते जाए। मोहम्मद अली कहते हैं, सर कैन यू शेयर सम प्रॉब्लम्स व्हिच पाकिस्तानी फेस आफ्टर गोइंग टू यूरोप? ऐसे कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो मुसलमानों को तकरीबन दुनिया में हर जगह हो रही है, लेकिन यूरोप में ऐसे नहीं है। यूरोप में सोशल इंक्लूजन और ये टॉपिक काफी वो हो रहे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, सारा कुछ होता है। ये प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको आपको देखना चाहिए इस टाइम पे। आप सिर्फ बाहर जाने के लिए कोशिश करें, पढ़ने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है भी। Are there scholarships? मोहम्मद हमाद कहते हैं, are there scholarships in the form of TA and RA in US and Canada? और ये मुझे नहीं पता, I have never been to US and I have never been to Canada। ये आप किसी forums ढूंढें जहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या। My CGPA is 3.9 in electrical engineering and my main focus is Erasmus Mundus scholarship. How much chances do I have? You have all the chances that are available there, believable. So depend करता है कि आप इस 3.99 CGPA को कैसे बाकी चीजों के साथ बना के पेश करते हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। Shoaib Nasir कहते हैं, sir, I emailed a professor for PhD supervision. He replied and asked a research proposal. What main point should I cover while making a proposal? Topic is the main point. उस प्रोफेसर ने किस पे काम किया? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उस प्रोफेसर की प्रोफाइल जाके देखता, वो किस पे काम कर रहा है, उसके रिसर्च पेपर्स का क्या है, फिर उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ के मैं लिखता कि आपने इन चीजों में काम किया और मेरा इंटरेस्ट है, मैंने कोई पीछे कोई काम ये इस तरह किया था जो कि इससे रिलेटेड है, तो मैं आपके साथ मिलके इस बात पे काम करना चाहता हूँ। सही है। Certified documents are different from attested, right? Attested हम यूजुअली ये कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी 17 के स्केल के बंदे से आपने कर दिया तो वो अटेस्टेड होता है, लेकिन एक्चुअली सर्टिफाइड कॉपीज ही होती है जो कॉपीज उस
एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब ये होता है कि उन आपने कॉपीज बनाई है और फिर उन्हीं लोगों से सर्टिफाई किया हुआ है जिन लोगों ने वो कॉपीज इशू की हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी ने की है तो इसलिए अगर यूनिवर्सिटीज, लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज भी सर्टिफाई कर सकता है, यूजुअली लोग HEC से भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करते हैं, या अगर FFSC का या O लेवल्स का है तो वो IBCC वगैरह से फिर करवाने पड़ते हैं। I wrote a research proposal. Rida Rehan कहती है, I wrote a research proposal during my MS, which my supervisor got the grant, but my name is not mentioned in that project. Can I mention such things in the SOP? Yes, of course. Yeah, if I were you, I would mention this and also ask this professor the supervisor who used this research proposal that you wrote to give you a reference letter or recommendation letters. It's even better. Is GRE tough? मैं नहीं बता सकता, डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में तो आसान सा है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। What's please about USAID scholarship? It's a good scholarship. Apply for it. When will it come? ये मुझे नहीं पता, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कब आएगा। Can we do part-time jobs during our stay in Europe? Yes, you can. In many countries, you can work up to 20 hours a week. लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप और जॉब्स, अगर आप जर्मनी में आपको अच्छी स्टूडेंट जॉब्स मिल जाती हैं किसी प्रोफेसर के साथ या किसी कंपनी के साथ, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग वगैरह की। इटली में आपको वैसे कम मिलती हैं, और जॉब अगर करनी है तो उसमें आपको लैंग्वेज कम आनी चाहिए आपको। ठीक है, अपलोड योर होल टुडेज लेक्चर, थैंक यू। हो जाएगा सर। योर ईमेल आईडी, यार ईमेल आईडी आपको बाद में हम देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर देखें। Sir, can open processor develop be a substitute for volunteer work? Can it be? Absolutely. Open, अगर आपने कोई वाकई काम किया, आपका ओपन सोर्स पे आपने काम किया, GitHub पे आपका अकाउंट होगा, उसको रेफर करें, बताएं कि आपने क्या काम किया, उसको अपने उसके बारे में लिखें। वॉलंटियर वर्क नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल वर्क है। GitHub पे आपने जो आपने ओपन सोर्स पे काम किया वो आपका प्रोफेशनल वर्क है, आपकी स्किल है आपके पास। वॉलंटियर वर्क आप उसको क्यों लिखेंगे? अमीन जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। यू कैन इंक्रीज योर चांसेस। सचल हुसैन कहते हैं, विल GRE हैव गुड इम्पैक्ट ऑन हरासमेंट? एब्सोल्युटली, GRE का अच्छा इफेक्ट होता है। रिक्वायरमेंट ये शायद कुछ एक आध दो से में हो, लेकिन हर जगह नहीं है, चेक कर लें। लेकिन अच्छा, जाहिर सी बात है, आपने GRE किया हो तो वो एक पॉजिटिव चीज है। स्कैन कॉपीज ऑफ माई डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वर्क। जब आप अप्लाई करते हैं, मोस्टली प्रोग्राम्स हैं वो आपसे स्कैन कॉपी मांगते हैं, वो ओरिजिनल्स के आप बस स्कैन जमा करा दें, उनको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर भी स्कैन है ना। लेकिन वो अगर आपसे मांगे पोस्ट में और कहेंगे सर्टिफाइड, तो फिर सर्टिफाइड भेजें। IELTS TOEFL, आई कैन नॉट एक्चुअली से। मैंने TOEFL किया था, मेरे ख्याल में TOEFL थोड़ा आसान है। IELTS आई डोंट नो, लेकिन TOEFL बोरिंग भी होता है। मेरे टाइम पे TOEFL जो था वो आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के करना होता था, वो थोड़ा अजीब सा होता है क्योंकि आपके पास सामने कोई बंदा नहीं होता। लोल फॉर सारा, आई डोंट नो। व्हाट आंसर्स डू रिव्यूअर्स लुक फॉर रिगार्डिंग आवर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये कि आपका क्लियरली आइडेंटिफाइड प्लान है कि नहीं, कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे, और वो जो आप करना चाहते हैं ये प्रोग्राम वाकई आपको उसमें उसके करने में हेल्प करेगा या नहीं, और वाकई आप सक्सीड होंगे या नहीं। ये चीजें जो है वो उसमें देखते हैं। शुड वी ऐड अ पैरा फॉर स्कॉलरशिप्स नीड और ओमिट दिस फॉर Erasmus? नहीं, आप बिल्कुल लिखें कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अदरवाइज। Some programs are not mentioned on Erasmus Mundus website, so how can I apply for Erasmus through universities in Europe? आप मोस्टली प्रोग्राम्स, ये मेरे ख्याल में सही स्टेटमेंट नहीं है। जो प्रोग्राम Erasmus की वेबसाइट पर नहीं है, Erasmus Mundus कोर्स कैटलॉग पे, वो मोस्ट प्रॉब्ली रिटायर हो चुके हैं। अगर नहीं हुए, आपको नजर आ रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को लिखेंगे इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है, वो आपको बता देंगे। इंजीनियर अदील कहते हैं, गेटिंग एडमिशन in a university ranked in 500 in 2017 and getting admission in a university ranked 50th in 2000. Which is better? I mean, should we delay our PhD trying to get admitted in a top university? Good question, Adil. I personally do not think that ranking matters. I think what matters is the type of work
with the person that you're going. So if you have you're doing a PhD and you're going to do it with a great professor in some university, and I don't know, Cyprus, for example, you look at this guy's profile, आप उसकी profile को देखते हैं, he has brilliant research papers in really brilliant journals, conferences, for example. वो मैटर करता है. आप अच्छी PhD करेंगे. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब आप जाएंगे, पाकिस्तान में तो वो अच्छा इसने तो इटली से किया हुआ है और दूसरे ने अमेरिका से किया हुआ है. सो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट समबडी हु डिड हिज PhD from, let's say, Germany is automatically better than somebody who did his PhD from Portugal, for example. अब ये पाकिस्तान के हालात हैं, आपको ये evaluate करना पड़ेगा कि आपको मैटर क्या करता है. If you have, I can tell you, if you really have a good research approach and you really come up with great research articles, none of this would actually matter. So मैं थोड़ा थक गया हूँ, I guess. Scan copy of certified documents was written. So in that case, scan copy of certified documents means the original, because your original is certified. Or if you, I don't know, I mean, मेरे ख्याल में तो ओरिजिनल जो है वो सर्टिफाइड ही है, लेकिन आप जाके उसको दोबारा से उस पर कोई सर्टिफिकेट लगा दे. मेरे ख्याल में सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स का वो होता है कि जो साइन हो और ओरिजिनल हो. अगर आपने पोस्ट के जरिए भेजने हैं, फिर आपने उसको दोबारा से सर्टिफाई करना होगा. दिस इज माई, बट आस्क, if I were you, मैं यूनिवर्सिटी को लिखूंगा कि what do they mean by certified, कि मेरे पास ओरिजिनल है, उनका स्कैन, is it certified, or should I go them and then ask them to re-sign it or put some other stamps on this and then take a scan of it. I mean, I will ask that from them. Shahriyar Hussain, Aisha Kamal कहती है, in IMPRSCS PhD program in Germany, they need a publication of paper of master's research, but I don't have any publication, so I apply for the scholarships or not. Apply करने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे ख्याल से फ्री होगा. तो आप कहते हैं कि मेरे पास मास्टर के रिसर्च से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर है कि आप कोई खुद से रिसर्च प्रपोजल लिख के वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें. उसके ये रिक्वायरमेंट्स होती है ना इस तरह की, वो इतनी हार्ड नहीं होती. वो सिर्फ आपसे चाहिए, उनको ये होता है कि आपके पास कोई वो चीज ऐसी है जिससे आपके रिसर्च कैलिबर का पता चले. What will be the great option for me if I get MS from China or Germany or Sweden? मेरे ख्याल में जर्मनी स्वीडन से अच्छा होगा पर इसमें चाइना के, जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस. इनामुल अताश कहते हैं, मैं भी underrated, how good are the Russian universities or Chinese for masters in machine learning big data? मुझे नहीं पता. I cannot actually say how Russian universities or Chinese universities are. I'm sorry. I mean, मैं वहां गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कितनी अच्छी है. ये आपको थोड़ा खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें. Thank you for everything and especially for tolerating the childish behavior. I don't have any questions. Very informative and supporting webinar. Thumbs up, Tahir. Thank you very much. Nafisa, thank you, sir, for your time and guidance. It was indeed a beneficial one. Thank you, thank you. Sarah Khan कहती है, is there any application for fee? Erasmus की applications नहीं है. Erasmus की application fees नहीं है. Mostly free. Okay, so I think we are near the conclusion of this seminar. It was fun speaking to you guys, and I hope it was useful for most of you. I'm gonna explain some. अगर आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके कर सकते हैं. ये अगर आपको ये सारा जो कुछ हमने बात की है आज के ऊपर, ये हमारे ब्लॉग पे भी अवेलेबल है. और ब्लॉग का एड्रेस जो वो आप यहाँ देख सकते हैं, emapakistan.wordpress.com. इस पे आप जाके ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलेगी. सही है. और इसके बाद हमारे पास, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन और आप लोगों को अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे. इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें कि आप
स्किल्स डेवलप कर रहे हैं आप लोग अप्लाई करते हुए भी, ये ऐसा नहीं है कि आप बस सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, इससे आपको अपने आप को मार्केट करने की स्किल जो होती है वो भी आपके पास आ जाती है, सीवी आपका डेवलप होता रहता है. तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज हु जॉइंड. I hope it was useful for you. And then with this we say bye bye. Thank you very much.